Hare Krishna, good evening, welcome all of you all for this Saturday evening class. Supposed to be a Bhagavatam class, but today we are going to discuss about Rath Yatra, because on Friday it is Rath Yatra at Jagannath Puri. So, how many of you all have gone to the Rath Yatra? कितने लोग गए हैं अभी तक? रथ यात्रा, नॉट जगन्नाथपुरी, हाँ मीरा रोड रथ, नहीं जगन्नाथपुरी रथ यात्रा कितने लोग हैं? कोई नहीं गया? सटल फॉर्म में या क्या है? ग्रॉस फॉर्म में, सटल फॉर्म में. I do it in school, okay. Fine. So, it's really a fantastic event, and it's like the only event where foreigners flock from all over the world to see this event. It's a mega event, and there are certain things which has got significance also. So, we'll try to understand this entire Jagannath Ji's Leelas and how this entire Rath Yatra process takes place. Before that, you must all seen the Snan Yatra photographs. So, Snan means नहाते हैं, भगवान नहाते हैं. So, we'll discuss about those things also in detail. So, basically we'll have a real idea of what Jagannath जी का पूजा कैसी होती है and all that. And अगर भगवान ने चाहा तो next year हम लोग सब जाएंगे जगन्नाथ रथ यात्रा देखने के लिए. It's a once in a lifetime. Once in a lifetime, huh? Because I still remember that year I had gone with without shoes and all. So by that time I could pull the ratha and come, and by the time the entire the yatra was over, Rath Yatra was over, my leg was swollen like a football. Because everyone is like they just trample over your leg, like it's really sick. But in those days, earlier days, it used to be like लोग जानबूझ के रथ के पहिए के नीचे अपना जान देते थे. They used to jump under the thing to die, and they say that gives them liberation. But now those things have been stopped. Even going on the ratha now has been stopped. Earlier it was allowed. Now it has been stopped, that you cannot go climb up the ratha and literally you could embrace the Lord. So nice. But that has been now stopped in today's date. But still, the Rath Yatra is a very nice first festival. Only thing is there are two problems. One is you don't get room, and second is you don't get food. The only two things. The biggest two problems, basic problems, which you have to ready yourself for. Rest, it's an experience. So basically, you must have heard about Rath Yatra. That is Jagannath Ji, Shri Mandir से, जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर जाते हैं. बट उसके पहले 15 दिन पहले एक स्नान यात्रा होती है. स्नान यात्रा का फोटोज तो आप लोगों ने देखा होगा, बट एनीवन, ऑल ऑफ यू ट्राई टू अटेंड द स्नान यात्रा और ऑल्सो नेक्स्ट टाइम. इट्स अ वेरी नाइस इवेंट. जगन्नाथ जी को नहलाते हैं. बट हैव यू एवर, डू यू नो द रीजन व्हाई इट इज ऑल डन? द एंटायर स्नान यात्रा के पीछे रीजन डू यू नो? तो पूछना चाहिए ना. Eight modes of intelligence. The first questioning is the first point. You remember that 8 modes of intelligence? The first is कैसे क्यों और कैसे होता है ये स्नान यात्रा. सो जनरली इट इज सेड भगवान को इतना गर्मी लगता है. So उस दिन लाइक ही इज बॉइलिंग हॉट, तो lots of water is used to bathe the Lord, to get himself cool. But in the process, the अचानक धूप से बाहर आके से नहाओगे तो डॉक्टर साहब गर्मी होती है, बीमार हो जाते हैं ना. Suddenly from the sun you come and you take a hair bath, you will fall sick. बस भगवान जी भी उसी तरह sick हो जाते हैं. This is a general way in which is denoted, but there is some higher understanding for that also. There was a devotee called Madhav Das. Madhav Das ji was a very nice, sincere devotee of the Lord, very बोलते ना staunch devotee and a nice person, and he used to serve the Lord very nicely. But once it so happened that he fell sick. He fell so sick that he didn't have anyone to take care of him or his himself or his needs. He used to do his own cooking, he used to eat, he used to do everything. But once he felt so sick that finally
he was passing his urine and motion also in the, there was no bed, rather on the clothes. उसके कपड़े में वो मलमूत्र त्यागते थे. He used to pray to God that time also. So finally, God came as a small kid, गोविंद बन के आए, और उनके मलमूत्र जो कपड़े थे जिसमें मलमूत्र लगा हुआ था उसको धोते थे. He used to clean. After a few days, he became all right. He asked, he knew Govind was none other than the Lord himself. He asked, Lord, what is the need for you to do all this? क्या जरूरत थी? You are God. 1 मिनट में मुझे ठीक कर सकते थे. But you didn't make me all right. But आपने क्या किया? मेरे गंदे कपड़े धो रहे थे. You were serving me. What is the need? What was the purpose behind it? That time Lord says that, see, your suffering is because of your prarabdha karma, and I cannot change prarabdha karma of anyone. What about you? For my own parents I could not change. Devaki and Vasudev, just imagine what a torture. 6 children killed in front of them. 7th was okay. No, Sankarshan was pulled over the thing, and the last one, of course, Vasudev himself took over there. But being God myself, I could not change the prarabdha karma of my parents. So, that is the reason. जो आपका प्रारब्ध है वो कट रहा है, वो अच्छी बात है. It is very nice that your prarabdha karmas are getting cut off. Why? अगर प्रारब्ध कर्म नहीं कटे ना, आपको उसके लिए वापस जन्म लेना पड़ेगा. दैट इज योर पर्सनल अकाउंट है, आपने खुद कमाया है वो प्रारब्ध कर्म, तो आपको झेलना पड़ेगा उस चीज को. सो इट इज बेटर दैट यू फिनिश इट ऑफ इन दिस बर्थ इटसेल्फ एंड यू गो बैक. एंड डोंट वरी, यू हैव गॉट 15 days ऑफ एलिमेंट्स मोर. 15 दिन का अभी भी आपका बीमारी बाकी है, बट वो मैंने अपने पे ले लिया. I have taken it on myself. So it is said that 15 days Lord falls sick because he has taken the ailments of his devotees. So 15 days he is like, he doesn't eat anna, खाना नहीं खाते हैं. 15 दिन he eats only his fruits, काढ़ा, 2-3 वैरायटी का काढ़ा बनता है, and some लेप बनता है, like कुछ पीट के कुछ के बनाते हैं, बस. very very less he eats, and all 3 are sick. Jagannath Ji is sick, Baldev is sick, and Subhadra is also sick. तो तीनों रेस्ट करते हैं. and one day before the Rath Yatra, that day he becomes all right. but then that day इतना पानी गिर चुका होता है स्नान यात्रा के दिन कि पूरा रंग उतर गया रहता है. so they paint the Lord. It is repainting is done. That is why if you closely watch on Rath Yatra day, the eyes of the Lord are so big and it is white, surrounded by a red or a pinkish circumference. The circumference, there is a pinkish color. वो white color में आपको थोड़ा थोड़ा blackness दिखेगा. क्यों? वो लोग उठाते हैं ना, paint is still little wet or not fully dry, तो उसमें rub होता है. तो again they have to repaint, but usually you will see this on the day where Lord is taken out and put in the rath. Because that day he makes himself also very heavy, and the return yatra he makes himself very light. जाते वक्त कम से कम hundreds of people are required, and आते वक्त कुछ लोगों के साथ आ जाएंगे वो. Cool. So this is one of the reasons why he falls sick, because many people say, is it true, really falls sick? So it so happened once one doctor and with his few of his colleagues, they had gone to Jagannath Puri, and it was coincidentally it was Rath Yatra. So the doctor said, oh, this seems to be foolish, this seems to be fanatic. How can this happen? How could such a thing happen? I don't believe in this. So and that time in those days भगवान को आलिंगन करने छोड़ते थे. So he went up. And what happened was he went and embraced the
Lord. When he embraced the Lord, as a doctor, he could feel the temperature. He could feel the temperature. It is said he was so hot that the doctor got blisters in his finger. So hot, मतलब इतने बुखार, इतना हाई बुखार था. So कहने का मेरा भावार्थ क्या है कि yes, he really falls sick, and sometimes कभी कभी एक दिन आगे पीछे भी बोलते हैं ना, on the dot date he doesn't become all right. एक आध दिन आगे पीछे भी लगता है बुखार जाने को. So this is one of the main leelas of Snan Yatra, leela of the Lord. Now it comes to the point of the Rath Yatra. All of you all must have heard my earlier lecture on Rath Yatra. Most of you all, except a few. क्या हाँ ना कुछ तो emotions दिखाओ. Blank. दिवाली सुना है कि नहीं सुना है? Okay. So just I'll give a brief for the newcomers. I'll just give it in a nutshell so that it becomes easier, and you also can revise what was done 1 year before or 2 years before. So Rath Yatra, there are 3 reasons. It is said in the various Puranas, there are various 3 reasons for the Rath Yatra. The first, the oldest and the true reason is Rath Yatra was done. Once there was a king named Indradumna Raja. He was the king of Avanti. Avanti means today's Ujjain. And he was a very nice devotee of the Lord Krishna. And once a Brahmana came and told him, "What are you sitting here and worshipping? Go to Neel Madhav, where Lord Neel Madhav is being present in his form." Neel Madhav means he is a bluish form, Neel color. And he will bless you. And the minute you get his blessings, you will get immediate 400 form and you go. And it is at Neelanchal Parvat. Now where is this Neel Madhav and Neelanchal Parvat? I don't know, you find it out. And he left. So the king immediately called the Indradumna Maharaj king. He immediately called his subjects, said, "Jao, point out." So again groups were made and sent here and there. But he had his most favorite and sure shot student and Pujari, and his name was Vidyapati. So Vidyapati went towards Bhuvaneshwar, and those days there were no flights and no trains and such things, walking and sometime on bullock cart. Somehow he reached Bhuvaneshwar, और वहाँ पहुँच के उन्होंने क्या देखा कि भाई यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा है, मुझे मिल नहीं रहा है. किसी को भी पूछा नील माधव किधर है, नील माधव किधर है, कोई बताने को तैयार नहीं थे. सो इमीडिएटली ही डिसाइडेड, चलो अभी क्या करूं, कहाँ ढूंढूंगा नील माधव. तो ढूंढते ढूंढते वो एक साबर जात का एक, देयर इज अ कम्युनिटी कॉल्ड साबर्स. साबर मीन्स दे रियर पिग्स एंड शीप. Low community, very low grade community. It's not supposed to be a high class community, it's a low grade. So he went near that place and he went and asked the village, "Can I stay here?" So the village Mukhya was not there, but his daughter was there. He said, "You wait, my father will come and then you can ask him." Then a father came in the evening. He asked him, "Can I stay? I have come from Avanti and I am searching for Neel Madhav." He says, "I don't know where Neel Madhav is, but you can stay here." तो उसने वहाँ रहने को अनुमति दे दी और उसने अपनी बेटी को बोला कि प्लीज़ इनका सेवा करना, टाइम टू टाइम इनको खाना खिलाना. तो बेटा बोला ठीक है. थोड़े दिनों के बाद इसने देखा कि इसके मतलब जो मुखिया थे, साबरों का जो राजा था, whenever he used to come in the early in the morning, and he used to come with a bright effulgence and fragrance, nice fragrance. अच्छा, यहाँ बेटी का सेवा लेते लेते यहाँ बेटी के साथ थोड़ा प्यार भी हो गया. So finally he got married to her, but he was already married, but he got married again. See, that is what is called as focused work. Somehow he married that girl also, and then he asked his wife, "Now please tell me where your father comes from in the middle of the night, and he comes effulgent and bright and fragrant." तो उन्होंने बोला कि देखो मेरे पिताजी नील माधव का पूजा करने जा रहे हैं. क्या बात, नील माधव का पूजा करने, मैं तो उनको ढूंढ रहा हूँ. तो मुझे पापा को बोलो ना मुझे लेके जाने के लिए. नो 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 नो, आई कैन नॉट टेक हिम, टेल हिम. ही रिक्वेस्टेड.
एंड आखिर में पत्नी ने बोला ठीक है, मेरे पति हैं, घर के अभी सदस्य हो गए हैं, तो इनको दिखाने में क्या हर्ज है. Immediately she went and told her father. Father said no first, and then he said ठीक है, I'll take her, but there's a condition. कैसे लेके जाऊंगा? आंख में पट्टी बांध के, वो भी बैलगाड़ी में बिठा के. और ठीक है, तो साथ में इसने भी, विद्यापति वॉज ऑल्सो ब्राह्मण, आई वॉज इंटेलिजेंट. उसने तुरंत क्या किया, अपनी पत्नी को बोला कुछ आइडिया दे, एक काम कर, एक छोटी सी थैली में मुझे राई का दाना दे दे. राई का दाना क्यों? मैं पूरे रास्ते पे वो राई का दाना डालते जाऊंगा. आज नहीं तो महीने भर जब बारिश गिरेगी अपने आप उससे पेड़ उगेगा, तो उस पेड़ को फॉलो करते करते आई कैन गो एंड टेक दर्शन. ही डिडंट टेल हर द रियल रीजन दैट ही हैज कम एज अ डिकॉय ऑफ द किंग अवंतिका में डिकॉय हूँ, वो नहीं बोला उसने. तो उसने बोला ठीक है. एक मुट्ठी भर के उसने मतलब बैग भर के राई का दाना दे दिया, और उसने आँख पट्टी बांध दिया और गाड़ी चलने लगी. ग्रास से भर, डालते 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 पहुंच गया नील माधव. एंड व्हेन ही वेंट देयर ही सॉ, वाओ व्हाट अ प्लेस. इट वाज अ सेरीन प्लेस. आज भी वो जगह है, हाँ, बट वो मूर्ति नहीं है, बट वो जगह है. तो immediately he went to that place, and there was a nice kund over there. Whenever you come out of Jagannath darshan and you come out right side, वो पांडा लोग बैठे रहेंगे, ये वो कुंड है बोल के वो लोग मतलब डंडा मार के बोलेंगे पैसा डालो पैसा डालो. Actually there is that kund over there in नील माधव. वो देख रहे थे. ससुर ने बोला रुको, मैं जरा के फल फूल का बंदोबस्त करता हूँ, आप यहाँ खड़े रहो. ये गया है बाहर, घूम रहा है, देख रहा है. देखा एक कौवा सो रहा है ऊपर, सोते सोते गिर गया. सीधा गिरा तो सीधा कुंड में, और तुरंत ही केम आउट इन ए 400 फॉर्म. वाह, मैं भी कूदता हूँ इमीडिएट 400 फॉर्म. इतने में ऊपर से आवाज आया, हे डोंट कमिट सुसाइड, हाँ, 10,000 years you have to be in Pretioni. If you commit suicide. The crow felt of its own accord. It didn't jump into the water. It fell while sleeping, it fell off. Secondly, he said, you can go and tell the king, but remember, I will not be available now here. The Sabar also became very sad. So I will not be available here. I will vanish from here. And then you will see me in some other Swarupa in Jagannath Puri, where I can see and put mercy on more number of people. बहुत सारे लोगों पे मैं कृपा दृष्टि रख सकता हूँ. इसके लिए जगन्नाथ जी की आंखें इतनी बड़ी बड़ी क्यों हैं? ताकि वो दूर से भी एक व्यक्ति उनकी आंखों को देख के कृपा ले सके. तो somehow after the darshan he had, there was a big storm and the whole temple was covered with mud and the deities were vanished. Of course, the ससुर दामाद तो घर पे आ गए थे. दामाद ने तुरंत इसने तुरंत क्या किया, ससुर ने दामाद को बंदी बना लिया घर पे, होम हाउस अरेस्ट में कर दिया. मतलब बाहर निकलना नहीं तुझे, बांध के रख दिया. मगर उसने पत्नी को बोला देख, मुझे राजा के पास जाना है, मैं उसका नौकर हूँ. एंड पत्नी ने भी एंड में मान के उसने हाथ खोल दिया, वो चला गया. यहाँ पे साबर राज वहाँ गया तो तब तक एवरीथिंग वॉज क्लियर, मतलब covered. He went to Avantika. Immediately the king came with all his horses and his whole entourage and everything. He came over here, but यहाँ पे कुछ मिला नहीं. तो राजा बहुत दुखी हो गया. He started crying. At that time, he was such a nice devotee that Lord himself told him, "Don't worry, I will give you darshan, but now I will give you darshan in the form of Daru Brahma, wooden form. The wooden form. Daru means wood. Daru Brahma के रूप में मैं आपको दर्शन दूंगा." And you all must have heard, every 13 years there is a Navakalaivaram. The old Vigraha are buried and the new Vigraha is taken out. And that new Vigraha is made, sorry, not taken out, it is made. And before burying the old Vigraha, the Brahma Tattva or the heart or the living substance from that Vigraha is transferred to the new Vigraha.
एंड आज भी पूरा जगन्नाथपुरी में लाइट्स बंद हो जाता है, ये रात का टाइम पे होता है. एंड दिस दारू ब्रह्म इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन डीटी टू another deity, the old deity to the new deity, and then the old deities are buried in one place. It's in the temple compound only, it is there behind, just where you go for the kitchen का राइट साइड में जाके नीचे जाओगे तो देयर इज वन कुंड, और वहाँ से वो उस जल से भगवान का पूजा पाठ जो भी होता है उससे होता है. So the king was very sad. बोला क्या, how I have missed this darshan, I am searching for you for so long time. But sir, don't worry, Lord said, don't worry, I'll show you in the form of Daru Brahma. He said, in a few days, in the beach, there will be a log of wood which will come. Get that wood, and one carpenter will be appointed. He will make this nice deities of that, and then you can install that in the temple, and that will be my औदार्य रूप और my merciful रूप. ठीक है. They were waiting. Finally, after a few days, a big log of wood came. The king called for the elephants, horses, all his manpower was put, but nothing could be done. They could not move the log of wood even for an inch. एक थोड़ा से भी उसको हिला नहीं पाए. तो तुरंत they started praying to God. The gods बाहर से आकाशवाणी वापस से हुई, जाके उस साबर राजा को बुलाओ, विद्यापति को बुलाओ और सोने का रथ मंगाओ, और सोने के रथ में इसको उठाओ. ये 2-3 जन गए और खींच के आराम से वो लकड़ा आ गया. That's what I said. जगन्नाथ जी can make himself light, can make himself heavy also. Immediately he transferred him to the Vidyapati, and the Sabar Raja came. They put him in the Ratha, and then he was taken to a place near the temple where all the carpenters tried to carve the deity, but the deities could not be carved. जैसे हथौड़ा मार दे, हथौड़ा टूट जाता था, बट कुछ नहीं होता. Finally, Vishwakarma himself, in the form of a carpenter, came, and he told the king and his wife that मुझे 15 दिन का टाइम चाहिए, कोई नहीं आएगा 15 दिन के लिए. 15 दिन के लिए मैं अंदर रहूँगा, काम करूँगा, कोई भी अंदर घुसेगा नहीं. ओके, कीप अ वॉच. तो 15 दिन के नहीं, इफ ही इज ओपनिंग दैट डोर दैट इज डेंजरस. So for 15 days he closed himself inside behind the iron curtain and was doing the puja. Sorry, not the puja, he was doing the carving work. So first 7 days, 8 days ठक 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 का आवाज़ आ रहा था, बट बाद में आवाज़ आना बंद हो गया. तो रानी ने बोला, देखो 15 दिन अंदर गया, 7-8 दिन से भूखा है, काम कर रहा था, मर भी गया होगा, देखो खोल के देखो. ऐसे नहीं, उसने बोला है नहीं खोलना है, नहीं खोल के देखो. तो दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट. फाइनली the Raja had to listen to the Rani, and he opened the curtain, and there he saw the deities in this incomplete form. When you see the Jagannath deities, it is in the incomplete form. No hand, no legs. Hands are like just 2 rods. So all was seen. So they were shocked. He was cursing himself. He could not see the carpenter also. Vishwakarma had just vanished, and he was cursing himself. Oh, I opened it halfway. That is why I could not see anything. He was very unhappy. So was looking here and there, what to do, what not to do. He was confused. Finally, again an Akashvani came. Bhai, this is the Swarupa in which I wanted to give darshan to the people in Kali Yuga. क्या ले रहे? नहीं देना है, इट इज ऑन द. अच्छा. सो आकाशवाणी हुई,
कि भाई मैं कलयुग में इसी स्वरूप में दर्शन देने वाला. So Indradumna Maharaj was wondering how come Lord can come in this form. That time Narad Muni comes and he tells him the story of how this Swarupa came or how this form came. It said in Dwarka, Krishna was very living a pompous life, but there was one small problem. And what was the problem? The problem was in the night Krishna used to never have a peaceful sleep. शांति से नहीं सोते थे. रात भर हे राधे, हे कृष्ण, अरे मेरा बांसुरी दे दो, अरे ललिता क्या कर रही हो, राधा रानी किधर है. So he used to always murmur in the night. He had so many wives, 5 prime wives, Mitravrinda, Lakshmana and all those wives. They were also wondering why Krishna is not sleeping peacefully. Tabhi, he said, देखो, all these Ranis went and asked Rohini Mataji, आप बताइए हम लोग राजा कृष्ण का सेवा कर रहे हैं, बट रात भर ये राधे अपने ग्वाल बाल का नाम ले रहा है, अपनी सखाओं का नाम ले रहा है, गोपियों का नाम ले रहा है, पर हम दिन भर सेवा कर रहे हैं बट उसका ही नाम ले रहे हैं. तो उसने बोला हाँ क्या करें, उसके पीछे बड़ी कहानी. तो उसने बोला ठीक है, क्या कहानी बताओ. कहानी ये है कि मैं आप बताऊंगी नहीं, अगर मैं बताऊंगी तो कृष्ण सुन लिया तो तुरंत चला जाएगा. जैसे ठीक है, तो एक काम करो, अलग रूम में जाके हमको बताइए. तो दे वेंट टू अनदर रूम. सो दे वर इनसाइड वन रूम, ऑल द क्वींस, एंड रोहिणी माता वाज टेलिंग द लीला ऑफ कृष्णस बाल स्वरूप लीलास. बट हु विल स्टे एट द गेट? सो सुभद्रा वाज गिवन द वर्क. तुमको दरवाजे पे खड़ा रहना है, किसी को अंदर छोड़ना नहीं है. वहां पे सुभद्रा को वहां खड़ा कर दिया, बोला अगर कृष्ण और बलराम आ गए तो तुरंत हमको इन्फॉर्म कर. ठीक. और यहाँ पे उसने अपना कृष्ण की लीलाएं चालू कर दी. आई एम कटिंग शॉर्ट बिकॉज नहीं तो लीलाओं में टाइम चला जाए. सो आई एम जस्ट कटिंग शॉर्ट. लॉट ऑफ लीलास वाज गोइंग ऑन ओवर दैट, एक्सप्लेनेशन वाज गोइंग ऑन. इतने में कृष्ण और बलराम दोनों आ गए, द्वारकाधीश और ये आ गए. आके देख रहे हैं कि ये लोग कुछ सुन रहे हैं, तो वो लोग भी दरवाजे के बाजू आके कुछ सुन रहे थे. ऑलरेडी लिसनिंग टू द लीला, Subhadra was crying, but not only crying, she had gone into ecstasy. And after that, when she didn't inform, because she was so much engrossed in listening, इतने सुनने में इतने बिजी थी कि वो ध्यान ही नहीं दिया उसने कि कृष्णा आके खड़े हैं. And Krishna and Balram also started listening. Then they remembered Krishna's pastimes, what they used to do in the Braj and all that. Now, it happens with us also, right? We humans also. Sometimes you remember your old days, the monkey business, what all used to do. And we also get into a form of a different mood. So imagine Krishna was so attached to the gopis and the Gwalbals that he was in ecstasy. And so much of ecstasy that he took this form of what we see in the form of Jagannath Puri. So immediately his hands pulled inside and his eyes became large and like his body like shrunken. He was like in a different world. And all three of them, because Balram was also there, so all three took this form. So that time Narad Muni came, and Narad Muni saw, Arey, why is Lord like this? When Narad Muni came and said Narayan, Narayan, immediately Lord came into his senses and again came back to his original Swarupa. So that time Narad Muni said, please, this Swarupa is very nice. I would like to see your Swarupa. So Tabi he promises Narad Muni, in Kali Yuga, I will give myself this form of darshan to everyone. So that is why Indradumna Maharaj is given this understanding that Narad Muni told that भाई ये स्वरूप का मैंने मांगा था, उन्होंने. There are two more stories which is related to Rath Yatra, which I'll come, but first let me complete this story. Krishna then went into a higher understanding. Narad Muni went into a higher understanding.
Indradumna Maharaj, he said, see, you need to have some nice celebrity to do the inauguration. So Indradumna Maharaj went to Brahmaloka. He was so powerful, he could go to Brahmaloka, and there he told us Brahmaji, that Brahmaji, please come for inauguration. But he could not get a direct entry. He had to wait for 2-5 minutes because Brahmaji was busy in some work. And by that time, Brahmaji could come and talk to him. Brahmaji said, कहाँ से जाओगे नीचे? 2-3 पीढ़ी निकल गई. 2-3 पीढ़ी निकल. That's the difference of time zone between the earth and the spiritual world. तो 2-3 पीढ़ी निकल गई है. It is not possible. So, and as it is, I will just come to put the dhwaja. You do the inauguration yourself. But by the time he came down, 2-3 जनरेशन हो गया था. जहाँ पे उन्होंने मंदिर बांध के रखा था, उसके ऊपर मट्टी का टीला हो गया था. और वहाँ के गजपति जो राजा थे, उस टाइम पे वो उसका घोड़ा एक बार ट्रिप होके नीचे गिर गया. किस पे ट्रिप हुआ? वो मंदिर के टीले के, मंदिर का जो गुम्बद है उसके ऊपर उनका घोड़ा पैर लग के, तो इतना मट्टी जमा हो गया था. सो देन दे एस्केवेटेड द होल थिंग. एंड देन फिर कॉपीराइट्स पे झगड़ा हो गया. हु इज द असली ओनर ऑफ दिस मंदिर? So immediately Brahmaji came down and said, confirm, no, he is the original owner of this mandir, he is the one who has developed it. Even immediately Gajapati moved back. But now don't ask me this question, how come Indradumna Maharaj was alive and his wife was alive? See, that's what is, Leelas are confusing. If you apply logic, then Leelas will not work. You have to apply faith. So finally, Indradumna Maharaj created a grand, pompous festival for his installation and all that. And Lord himself was very happy. He himself came and he asked, yes, how can I serve you? He asked, how can I serve you? कैसे आपका सेवा कर सकता हूँ? Lord said, I don't want, Indradumna Maharaj said, I don't want any seva. I don't want any boon. बोला क्यों? boon तो चाहिए, ले लो ना. नहीं, मुझे कुछ ये नहीं चाहिए, आपका सेवा है, मुझे आपका सेवा करना है. Then too much of pressuring, he said, ठीक है, मुझे आप एक काम करो, एक ऐसा वर देना कि हमको बच्चा ना हो, मुझे और मेरी पत्नी को बच्चा ना हो. What was his name of his wife? गुंडीचा. गुंडीचा को और मुझे बच्चा ना हो. तो बोला ये कैसा वर मांग रहे हो? सब लोग तो बच्चा मांगते हैं, तुम बोल रहे हो बच्चा नहीं चाहिए. बोला हाँ, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, क्योंकि अगर बच्चा आएगा तो ये मंदिर के ऊपर अपना कॉपीराइट्स डालेगा, मेरा बाप का है. आई डोंट वांट एनीवन टू ओन, दिस विल बी फॉर एवरीवन. एंड सेकंड, आई वांट यू टू बी ऑलवेज अवेक. सिर्फ एक प्रहर आपको सोना चाहिए, दैट इज 3 hours. रेस्ट ऑफ द टाइम यू हैव टू बी अवेक. तो लॉर्ड सेड ठीक है, आई विल बी अवेक, बट हाउ कैन आई बी अवेक सो मच? How can I be awake so much? बोला ठीक. So Lord puts a condition that every short duration you have to feed me प्रसाद. आज खाना खिलाते रहना चाहिए. और ऐसा कि खाना खाने के बाद हम लोग हाथ धोते हैं, बट पहले ज़माने में हाथ, मुंह और पैर तीनों धोते थे. आजकल मॉडर्न हो गए, स्पून से खाते हैं, इसके लिए हाथ भी, वो भी यदि ज़्यादा है तो फिंगर बोल में थोड़ा सा पानी में अपना उंगली घुमा लेते हैं. बट इन अर्लियर डेज, आई मीन दैट्स द इंडियन कल्चर. सो व्हाट ही डिड, ही सेड फाइन, यू हैव टू फीड मी इन सच ए वे दैट मेरा हाथ हमेशा गीला रहना चाहिए, सूखना नहीं चाहिए कभी भी. महाराज सेड ओके, दैट्स विल बी अरेंज. दैट्स व्हाई मैक्सिमम प्रसाद इज ऑफर्ड इन जगन्नाथपुर. ऑलवेज ही इज ईटिंग, नहीं तो नींद आ जाएगा. तो खाते रहते हैं, इसके लिए थोड़ा मोटे खाते पीते रहते हैं. एंड ऑलवेज इज अवेकन. तो देन ही टर्न टू हिज वाइफ, लॉर्ड टर्न टू हिज वाइफ एंड लॉर्ड सॉ हिज वाइफ वाज वेरी सैड. बोला क्या हो गया, क्यों दुखी क्यों है? नहीं, दुखी इसके लिए हूँ कि मेरा पति ने तो बोल दिया ठीक है, बट इच्छा तो थी अगर कोई बच्चा होता मेरे पास तो कितना अच्छा होता. वो मुझे माँ को कम से कम एक बार तो साल में मिलता, मुझे देखता, हमारे श्राद्ध करता. लॉर्ड सेड डोंट वरी, आई विल डू योर श्राद्ध एंड आई विल कम टू योर हाउस. एंड टिल टू डेट
one day in the year, Lord wears a white dress and he does Shraddha for the parents, Indradyumna Maharaj and his wife Gundicha. Even till today, this thing is there. And he did, don't worry, I will come to your house every year. And that is house is Gundicha temple. Every year I will come. And I will not come for 2-3 days. I will come for 10 days. And I will stay. And you can serve me. Every mother likes to serve the son, right? So she said, she was very happy. And that is why it is said, till to this day, the temple, from the temple, the Ratha goes to the Gundicha temple, where a makeshift kitchen is made. And during that time, this kitchen is broken. The Sri Lakshmi kitchen is there, which is broken. And a new kitchen is made. It's made in the the same old way, old fashioned is made. It's not the modern way of kitchen, but that is a protocol which they follow till to this day. And after the Rath Yatra is over, the wood of the Ratha is used as fuel in the kitchen. So it's a very nice experience you can have. So second story is like in so what actually this story implies is how devotees are. I mean, what makes a devotee special? जब भगवान ने बोला क्या चाहिए, तो उसने क्या बोला? मुझे कुछ नहीं चाहिए. और मांगा तो क्या मांगा? उनका दर्शन मांगा और मुझे बचा नहीं चाहिए. So this is one of the identification of a devotee. Once there was a devotee, his name was Ekdas, forgetting his name, very beautiful name. He used to be in Dwarkadish, near Dwarkadish, and he was so close to Lord Dwarkadish that Dwarkadish used to come and sit in his lap. उनके गोदी में बैठते थे भगवान और उनके साथ खेलते थे. तो भगवान आके गोदी में बैठते थे, बोल क्या चाहिए तुझे दे, तुझे जो चाहिए देता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जा, मुझे कुछ नहीं. एंड भगवान हमेशा उसको गोदी में बैठ के पूछे क्या चाहिए क्या चाहिए क्या चाहिए. एक दिन तो उसको गुस्सा आ गया, क्या है हमेशा लगा रहता है, क्या चाहिए तुझे, कुछ तो वर मांग, कुछ तो ले ले मेरे पास से. पर नहीं चाहिए तो जबरदस्ती क्यों कर रहा है? तूने इतने लोगों को ठग लिया अभी तक. यू हैव चीटेड सो मेनी पीपल. बाय व्हाट? बाय गिविंग देयर विशेस, बाय फुलफिलिंग देयर विशेस. So he says, what do we get? Immediately Lord said, yes, it's true. I give. The reason is, then I am not obliged. जब तेरी मांग मैंने पूरी कर दी, then I am no longer obliged to love you and serve you. वो दे देता हूँ. So my job is over. You also ask for something, नहीं मांगूंगा. अच्छा मुझे मांगना है तो ये मुझे वर चाहिए कि मैं कुछ न मांगू, ये मुझे वर चाहिए. लाइफ लॉन्ग आई विल बी कनेक्टेड विथ यू. दैट इज व्हाई इट इज सेड a pure devotee never asks anything from the Lord. He says, whatever I have got is because of my prarabdha, good or bad, happy or sad, and rest, why should I ask from you? If I ask, I can ask only material things. I can't ask spiritual things. एंड रही बात स्पिरिचुअल थिंग्स, वो तो आपको खुद करना है, भक्ति आपको करना है. नहीं आप अच्छा डिवोशन दो, कहाँ से डिवोशन दे? डिवोशन तो आपको करना है. हाउ कैन ही गिव यू डिवोशन? इट्स पॉइंटलेस. सो दिस इज हाउ वन हैज टू अंडरस्टैंड. सो देयर इज अनदर स्टोरी देयर. इट वाज ग्रहण टाइम, eclipse time, and all had gone near Kurukshetra to have a holy dip, and there Brajvasis had also come, and the Brajvasis were shocked to see Krishna in the Dwarkadish form, 400 form, mukut, well dressed, neat, एकदम cut to cut. ये लोगों को तो आदत है कृष्ण के साथ एकदम ग्वाल वाल बन के खेलने का आदत था. तो they were shocked. तू हमारा कृष्ण हो नहीं सकता. अरे मैं ही हूँ कृष्ण, नहीं हो ही नहीं सकता. हमारा कृष्ण ऐसा बंठन के सज धज के नहीं बैठेगा. चले गए. मैं राधा रानी और बाकी गोपी हैं. तो कृष्ण क्या हो गया तुझे, इतना चेंज हो गया तू, आजा हमारे ब्रज में आजा, यू विल बी हैप्पी.
So they unyoked the horses. जो रथ में कृष्ण बैठे थे उनके घोड़ों को निकाल दिया और खुद अपने हाथों से उस रथ को खींचा टुवर्ड्स वृंदावन. ऑफ कोर्स कृष्ण ने मनाया कि नहीं नहीं अभी नहीं, बाद में आता हूँ एंड ऑल दैट, बट इट इज सपोज टू बी द फर्स्ट रथ यात्रा ऑफ द लॉर्ड, एंड फॉर दैट रीजन रथ यात्रा इज कंसिडर्ड एज, गुंडीचा मंदिर इज कंसिडर्ड एज वृंदावन, एंड दैट इज कंसिडर्ड एज कुरुक्षेत्र. तो वहां से भगवान को लेके वृंदावन में लेके जा रहे हैं, ऐसा एक कहानी है. एंड द थर्ड स्टोरी इन विच इज देयर इन वन ऑफ द पुराणास which talks about Krishna was again lamenting in Dwarka, hi Radha Rani, hi mere sakha gwal bal kidhar hai. He was lamenting, and that time Narad Muni came, said, what happened, why is he lamenting? Dekho, you have to understand one thing, he is inseparable from the ब्रजवासीज, ही इज अनसेपरेबल, एंड उसने ऑलरेडी ब्रजवासीज के साथ इतना प्रेम है दैट ही कैन नॉट गेट सेपरेटेड ऑफ. सो यू सिंग द ग्लोरीज ऑफ सिंग, ही विल बिकम ऑल राइट. सेड वेट 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 वेट, इफ यू स्टार्ट सिंगिंग द ग्लोरी ही विल इमीडिएटली गेट अप एंड स्टार्ट रनिंग टुवर्ड्स ब्रज. तो अभी क्या करें? तो उसने बोला ठीक है, पहले अपने में से कोई जन वहाँ जाके पहले आगाही दे देते हैं, ताकि मैसेज देते हैं. Who will go first? Uddhav ji was chosen. Uddhav ji said, sorry, मैं पहले जाके ज्ञान देने गया था, वापस आ गया हूँ. I returned back with total failure. I cannot go. So will be the next brand ambassador. So they look towards बलराम जी. बलराम जी आप जाए, एक ग्राम मेरा भी नाम खराब हो चुका है, मैं भी गया था ब्रज में इनको बताने के लिए, मेरा भी नाम खराब हो गया, मैं नहीं जाऊँगा. तो अब बचा कौन? सुभद्रा मैया बोली ठीक है मैं जाती हूँ, मैं जाके आगे बताती हूँ. ठीक है, तो वन रथ वॉज प्रिपेयर्ड फॉर सुभद्रा मैया. जब सुभद्रा मैया रेडी हुई तब बलराम जी को थोड़ा थोड़ा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया कि भाई वो जा रही है, मैं नहीं जाऊँ, मैं बड़ा भाई हूँ, तो मेरा रथ रेडी करो, मेरा रथ रेडी करो. तो बलराम जी का रथ रेडी किया गया. एंड इट इज स्टिल टू दिस डे व्हेन द रथ यात्रा गोस, फर्स्ट बलराम जी's रथ गोस, second Subhadra Maiya's rath goes, and then the third rath was kept ready, and then they started singing the glories of Vrindavan. Immediately Krishna got up, oh I have to go and meet Radha Rani, I have to meet my sakhas. He runs towards that, and all the people tell him, देखो आपका रथ तैयार है, अब चढ़ जाओ. He goes on the ratha in the form of ecstasy, and then Krishna's ratha leaves. That is why Jagannath's Rath is always last, and it leaves after some time. It doesn't leave immediately. पहले बलराम जी का रथ जाएगा, बाद में सुभद्रा का रथ जाएगा, एंड कम से कम थोड़ा वक्त देने के बाद ही जगन्नाथ जी जाके रथ में बैठते हैं, और जगन्नाथ जी का रथ, भले रथ में तीनों चढ़ जाते हैं. आज भी अगर आप रथ यात्रा देखोगे तीनों रथ में चढ़ जाएंगे, बट सीक्वेंस इज ऑलवेज लाइक दैट. एंड टिल टुडे कलर्स है, नाम है, नंदी घोष एक है, उसका शंख पुष्पुल के, द वेरियस नेम्स, तीनों रथ का नाम अलग अलग है. एंड साथ में सुदर्शन जी. सुदर्शन जी क्यों भेजते हैं? बिकॉज सुदर्शन जी इज सेड टू बी सुदर्शन, भगवान का बढ़िया दर्शन करवाता है. एंड सेकेंडली इट इज ऑल्सो सेड इट कट्स द माया विच इज देयर इन आवर आईज. हम लोग माया की वजह से भगवान को नहीं देख पाते हैं ना, हम इधर उधर दुनियादारी में हम लोग बिजी रहते हैं, तो ये माया काट देता है सुदर्शन, ताकि हम भगवान को ठीक से देख पाए. दैट्स द पर्पस. सो आफ्टर ऑल दिस देयर इज अ वेरी नाइस रथ यात्रा प्रोसेशन which takes place, and to this date many a times it has so happened that Jagannath Ji doesn't reach home directly. It takes time for him. I mean, now the Rath Yatra has become very, very modern, but in earlier days, we have seen that Rath Yatra used to have a different way and style altogether. First and foremost, there's a nice story I'll tell you. There was one nice bhakta of Jagannath Ji, very nice bhakta.
and it is said that he used to play instruments, ढोल वगैरह बजाता था, मृदंग वगैरह बजाता था, एंड वहाँ पे जगन्नाथ जी के सामने नाच गाना भी होता था. This always there, even you go to south and all, it is still there. But this fellow somehow fell in love with that lady, and they're supposed to be like Devdasis, they're not coming from high class houses and all. So this fellow lost his heart to her and started meeting her, and finally during the Snan Yatra time, he went to her house. Not only went to the house, he started having physical contact with that female. And next day morning, it was Rath Yatra, he didn't even remember that house. But next day morning, when he heard the Shankha, the so-called girlfriend told him, oh, today is Rath Yatra. Then he realized, oh, today is Rath Yatra, and what am I? He started running towards the Ratha. Least did he realize that वो कपड़े गंदे थे. I mean, after this act, you are supposed to change your clothes, you are supposed to take bath. After every sexual act, these are the protocols given in the Manu Samhita. And he didn't do anything, he didn't even take a bath, he didn't even change his clothes, he just ran towards the Ratha. And when he went near the Ratha, and those days when he could climb, he started climbing. But कहते हैं ना, अच्छी खबर जल्दी नहीं पहुँचती है, मगर आपकी बुरी खबर पहले पहुँच जाती है. आपके बारे में अगर कोई बुरा न्यूज़ रहता है तो वो बोलना मत बोल के फटाफट फैल जाती है. तो he reached there, and the pujaris and all, they sent him out. Said, नहीं, तू जा यहाँ से, you are a unclean person, get out. And not only get out, they beat him, मारा उनको और उसको उठा के साइड में कोने में डाल दिया. And there he became so sad. I can't do the Rath Yatra. I know I have done a mistake, but please forgive me. So immediately he went to the beach, and there he drew 3 ratha on the sand. इन रथ ड्रॉ किया उसने सैंड में, और इमेजिन करते हुए वो भाव से खींच रहा था उस रथ को. इतने में यहाँ जगन्नाथ जी ने अपने आप को भारी बना दिया. एक भी रथ हिलने को तैयार नहीं. मतलब पांडास ऑल सेड, अरे क्या हो गया प्रभु, कालिया, देव रेफरेंस कालिया क्यों चुप गए, आप क्यों हिल नहीं रहे हो. बोला, तुमने मेरे भक्त का अपमान किया है, जाओ पहले जाके उस भक्त को जाके माफ़ी मांगो और उसको यहाँ लेके आओ. और गलती कौन नहीं करता है? Who doesn't make a mistake? Everyone does a mistake in life, but one who repents. See, atonement is different and repentance is different. Atonement means मैंने ये पाप किया है, इसका मैं प्रायश्चित करता हूँ, but that is not repentance. वापस उसको करने की उसके अंदर प्रवृत्ति रहती है, वापस कर लूँगा और वापस उसका पश्चाताप कर लूँगा. नहीं. Actual understanding is one should have the intensity is, if he does a mistake, even though he may be a devotee, but he can repent, and if he repents, Lord forgives him. But it's not that when he repents, Lord forgives, and again he keeps on doing it. That's why it's said in the Bhagavad Gita that at times a person may fall down, but then api chet suduracharo bhajante mam ananya bhav. It is said api chet suduracharo sadhureva sava mantavya. What is that? The words goes like this: अपि चेत् सुदुराचारो भजन्ते माम् अनन्य भाव साधुरेव स्व मंतव्य समग्र विवस्थितो हि स्थितः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी नामे भक्त्या प्रणश्यति. Lord tells this in the 9th chapter to Arjuna. He tells very clearly कि भाई अपि चेत् सुदुराचार, समझो उसने सबसे बड़ा दुराचार कर लिया, शाश्वत शांतिं निगच्छति, और अभी समझो उसने कर लिया दुराचार, पर कैसा है? साधुरेव स्व मंतव्य, उसको आई कंसिडर हिम एज गुड एज अ साधु. क्यों?
बिकॉज क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, शाश्वत शांतिम निगते। क्षिप्रम मतलब फास्ट, बहुत जल्द वो अपनी गलतियों का एहसास करके वापस भक्ति मार्ग से वापस आ जाता है। कई लोग भक्ति मार्ग में आते हैं, बीच में माया उनको भटकाती है, बट वापस जो मार्ग में आ जाता है उसको मैं शाश्वत शांति, उसको हमेशा परमानेंट शांति दे देता हूँ। कौनते है प्रतिजाने, कौनते ए अर्जुना डिक्लेयर नामे भक्त्या प्रणश्यति, मेरा भक्त का कभी नाश नहीं होगा, ये भगवान स्वयं कह रहे हैं भगवदगीता। सो वन शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड। सो अभी सिचुएशन हैज चेंज, अभी सब पांडा लोग गए, उसको जाके उधर से उठाया के बोला अरे भाई आप चलो, जगन्नाथ जी आपको बुला रहे हैं। और वो तो क्या, उसको पालकी लेके गए, उसके लिए पैलंक्विन में बिठा के लेके आया, और उसने ही फेल एट द फीट ऑफ द लॉर्ड, एंड देन ओनली जगन्नाथ जी मूव्ड फ्रॉम दैट प्लेस। सो दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ जगन्नाथ जी, दैट ही इज वेरी वेरी मर्सीफुल, तुरंत माफी दे दे। बट दैट डजंट मीन यू कैन कीप ऑन रिपीटिंग। Once in a while, if you fall down also, it is okay. Some may be very over smart. तो सुधरेंगे नहीं तो बिगड़ेंगे कहाँ से? समय भी लाइक दैट, सुधरेंगे तो बिगड़ेंगे, बिगड़ेंगे तो भगवान बोलेंगे तो सुधर जा, मैं वैसे ही रहता हूँ, प्रॉब्लम नहीं। That's not considered to be a devotee. Lord is also very smart. So last important part of the Leela is once the Ratha comes to Gundicha temple, there is one small Leela which happens on the 5th day. 5th or 6th day, there is one small Leela which happens where Lakshmi Devi comes in search of the Lord. वृंदावन गए, वापस आएंगे नहीं ना, Gundicha temple is referred to as वृंदावन, तो आएंगे नहीं, तो Lakshmi Devi goes in the Ratha, in a palanquin, and there she is taken inside the Gundicha temple, and there even to this day this ritual happens. It's very nice, कभी देखना चाहिए वो ritual. The Ratha is taken and Lakshmi Devi is in eye to eye with Jagannath Ji. Husband and wife is eye to eye, and she is very angry. She puts a garland on him, but actually what she is telling him, come on, jaldi घर पे आओ, यहाँ पे ज़्यादा रुकना नहीं. And like Jagannath Ji also accepts, yes, I'll come. But then he doesn't. He understands that it's a public place. He cannot lower down. But yes, he says in the heart of heart, he says yes, I'll come. And she comes out. Lakshmi Devi comes out, and a small portion of Nandi Ghosh, that is Jagannath Ji's Rath, is broken. आज भी तोड़ते हैं. It is said that Lakshmi Ji breaks that off. That is because of her jealousy towards Krishna's attraction towards the gopis in Vrindavan, and she doesn't go back the same route. She goes via other route and goes back to the temple. And on the 10th day, when the Rath Yatra returns back, that day, usually the Ratha will reach the temple at night. And रात को लक्ष्मी देवी दरवाजा नहीं खोलेगी. उनको बोला था ना जल्दी आने के लिए, आए क्यों नहीं? And finally, रसमलाई and रसगुल्ला and all that का भोग लगता है लक्ष्मी देवी को. फिर वो अंदर जा सकते हैं. Then he is taken inside, and then so there are various leelas. I mean, these are the general main leelas which we are not supposed to skip out when we are giving a lecture on Jagannath Ji. But there are various leelas of Jagannath Ji where Jagannath Ji plays with Madhav Das Ji. He tells Madhav Das Ji, come on, चलो थोड़ा आम तोड़ने जाते हैं. तो बोला अरे आपको आम तोड़ने की ज़रूरत क्या है? मैं अभी राजा तो मेरा स्टूडेंट है, मेरा शिष्य है, अभी बोलता हूँ राजा को लाके दे देगा आम. तोड़ के खाने में जो मज़ा है ना, चोरी करके तोड़ के खाने में मज़ा, वो खरीद के खाने में नहीं है. और मैं बाय डिफ़ॉल्ट आई एम अ ब्रजवासी, चोरी किया वहाँ पे तो मैं कैसे करूँ? तो मैं चोरी करके खाऊंगा. दिस इज़ फाइन. अब माधव दास जी बोलते हैं यार मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, आई एम ओल्ड मैन, कुछ नहीं, आई विल ट्रेन यू, कम. दे बोथ गो, क्लाइम द बैरिक एंड द वॉल एंड गो इनटू द गार्डन, आम के गार्डन में, और आम तोड़ने जाते हैं. दैट्स वाई इट इज सेड, अभिषेक में आम का अभिषेक भगवान जगन्नाथ जी को बहुत पसंद है, आम जगन्नाथ जी को बहुत प्रिय है. तो गए वहाँ पे, तो माधव दास जी के ऊपर खड़े हो गए जगन्नाथ जी, दैट इज कृष्णा, एंड आम तोड़ रहे थे.
इतने में माधव जी ने, अरे ज़्यादा वो देख, वो उधर अच्छा है, देख वो उधर अच्छा है। इतने में पीछे से माली आ गया, हाँ अभी डंडा पड़ेगा, ये वाला भी अच्छा है, निकाल के देता हूँ, आओ। कृष्णा तो एज यूजुअल 3 जंप करके आउट। तो ये बूढ़े आदमी क्या मांगेंगे, उसको पकड़ा, माली लेके गया सीधा राजा के पास। तो राजा बोला, राजा के पास लेके गया, राजा बोला ये चोरी कर रहा था। बोला गुरुजी आप चोरी कर रहे थे? मैं अब क्या बोलेगा अभी, एम्बेरस्ड इन फ्रंट ऑफ द किंग, इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट, अरे सिंह क्या करूँ, मैं ऐसे आया था, अभी कांट एक्सपोज द लॉर्ड ऑल्सो। समहाउ गुरुजी बोला, द किंग सेड आपको कितना चाहिए, हाँ मैं पहुँचा देता हूँ, आप बोलिए, पूरा बगीचा पहुँचा दूँ आपके लिए। नहीं नहीं कुछ नहीं, ठीक है मेरा टाइम खराब है, और कुछ नहीं बोल के चले गए। और बाहर गए तो कृष्ण मिले रास्ते पे। क्या मजा आया कि नहीं? तो काय का मजा आया, यू रैन ऑफ, मैं पकड़ा गया, आई टोल्ड यू आई एम नॉट गुड एट इट। हाँ इतना बड़बड़ नहीं करने का, तुरंत यू शुड बी फास्ट इन योर, चोरी के टाइम पे यू शुड बी स्पॉन्टेनियस एंड यू शुड बी फास्ट। तो मैं बोला ठीक है, तो मैं नहीं भागूंगा, मैं नहीं करूँगा ये सब, बात ही नहीं करना है मुझे तुझसे। बोला अरे बाबा इसमें जो मज़ा है वो कहाँ पे है, किधर आता है ये मज़ा। सो देन फाइनली the Lord sent lot of, the king sent lot of mangoes for Madhav Das ji. So Lord does these type of leela over there also. बोलते हैं ब्रज में जो मजा किया वो यहाँ थोड़ी मजा आता है, यहाँ तो सब आ जाता है, वो चोरी करके खाने का मजा अलग। So Jagannath ji is famous for various leelas. Actually I should have told you the story of बिमला देवी ऑल्सो, जो मंदिर के आंगन में है। कांची गणेश का स्टोरी है, वो भी आंगन में है, बट टाइम इज फैक्टर्ड, ऑलरेडी 8:45, सो लाइक टू क्लोज टुडेज क्लास ओवर हियर। एनीबडी हैज गॉट एनी अदर डाउट्स, क्वेश्चंस कैन आस्क। लीला में तो होना नहीं चाहिए, बट फिर भी एनी डाउट्स